So again, welcome you guys. So in the last lecture, we discussed about SFD BMD, that is what is shear force, what is bending moment, how we draw SFD BMD for different applications. So again, we have another numerical on the same lines. We have a cantilever beam which is having a UVL, right? And the end B is fixed and end A is free. And the span is of 4 meter and the maximum intensity of UVL is 3 kilonewton per meter. Okay. So can anybody of you tell me what is the next step I should do? What is the next step in this kind of numericals? Support reaction. Yes, support reactions. So how will you find out the support reactions? Support reactions, yes. So let us find out the support reaction. Now for support reactions, I'll be assuming one support reaction over here. Sorry, I do not have to assume anything here because this is a free end. So whatever the support reactions are there will be only over here. One is RB, the reaction at B, or we can also call it as VB because vertical is there. There is no horizontal because we don't have any horizontal load, but there will be a moment. So let us assume a moment M. Let us assume a moment M, and I want to find out that moment. Okay, so what we can do here is summation of moments at fixed point ही ले लो, तो moment about B point we will take must be 0. So as you can know, the very first thing what we need to do here is the equivalent load. How will be the equivalent of this? कहाँ पे act करेगा? Somewhere here, right ना? उसका value कितना होगा? Half into base is 4 and height is 3. How much is that? 6 kilonewton, and it will act at how much distance? 4 by 3 from this end, and from this end it is 2 into 4 by 3, 2/3 of the base, right? Everybody knows this. So now let us start solving for our moments. So when I talk about moment, तो यहाँ पे A पे तो कोई force नहीं है. The equivalent load, इसका moment कैसे आएगा? It is anti-clockwise, so I am writing positive moment. So the moment will be how much? 6 kilonewton is the force. It is acting at a distance of 4 by 3 point B. So 6 into 4 by 3 will give me that answer. This moment is positive I'm taking, plus the moment at point B which is there, and that has to be equated with 0. So you will get moment at point B which is M, will have minus into 4 into 4 by 3. How much will be this answer? Minus 8. 7.9. Yes, 8. 8 ना? हाँ, 7.9 या फिर 8 लिखो. 8 kilonewton meter. That is my answer for moment, which is anti-clockwise. Okay, this is what we know support reaction. Abhi second, this is the first condition we used. The second condition what we can use here is what? The summation of vertical forces. Summation in vertical forces Fv or Fy is 0. What is summation of vertical forces? There is downward force of 6 kilonewton, so minus 6. There is upward force Vb, so plus Vb, and that has to be equated with 0. So you will get the vertical reaction at B is 6 kilonewton upward. So we got, these are the answers as my support reactions. After that, what we do, the next thing, what we do for the next thing? Shear force. Shear force. How will you find out the shear force? For that, let me, by that time, I will draw my reference lines for drawing SFD and BMD. Yeah. So now, as you can see here, I want to find out now shear force calculation. Now in shear force calculation, the very first thing what I'm going to do is the locations. As you can see at point A, I cannot take 2 sections because you know that the shear force may you only take 2 sections if at all there is a point load acting and which was given earlier, not the equivalent point load. So here we have equivalent point load here. So this also we will not consider this point as for calculating the shear force value. We will be only calculating shear force at point B, and point A is the end point. So we will consider that. So you can write down at point A, the shear force value is simply 0. And then at point B, we will have 2 values. Okay. The first value is, let's say, shear force at point section 1. We will consider 2 sections, one on the just left hand side and one on the just right hand side. So when we consider on the left hand side, तो उसके left में एक ही force होगा minus
6 kilonewton like this. Okay, and on the right hand side there is 0. So as you can see here we will have two values. So let us draw the SFD. This is point A, this is point B. At point A we have 0 value. At point B, first value we have -6 and second value we have 0. Then how will you join this? As this is a UVL, in SFD there will be a parabolic curve. There will be a parabolic curve, and we want a increasing this one slope. So increasing slope matlab it will be curve like this. As you can see, ये curve का slope बढ़ते जाएगा जैसे जैसे मैं point B पे जाऊँगा. Point B पे अगर मैं tangent बनाता slope को, see here, I will give you two tangents. At point A, the tangent is almost horizontal, so slope is 0. Therefore, here see here the intensity is 0 here. The intensity is going to be maximum at this particular point. So you can see if I draw tangent to this, it will have maximum inclination with the horizontal. So the maximum value of shear force we are having at that point. Okay. Yeah. Have you understood this? So we will have this particular curve and we will name this as a parabolic curve because we know the curve is parabolic. Okay. So this is the SFD, that is shear force diagram. Now how will you go for BMD calculation? Yes, anybody? BMD calculation. Now at point A, the bending moment is simply 0. The bending moment at point A is simply 0. Why? That is the end point. So we have it is bending moment at point that at that point is 0. Now the next is at point B. Now you can, as you know, at point B we have already a moment. So therefore we need to take two sections. So I'll be writing down the bending moment one section and bending moment for second section. Bending moment for first section means I will not consider this moment. I will consider on the left hand side jitna bhi hai. And if you know, I will revise the sign convention. When I'm talking about left side of the section, the clockwise moment is to be positive. And when I'm talking about right hand side of the moment, the anti-clockwise is positive. Okay, so always remember this. So as you can see here, agar main ye pehla section leta hu, this is my first section and this is my second section. If I talk about first section, to uske left mein there is only one force, ye wala force hai, right na? There is only one force 6 kilonewton ka, and it is at a distance of 4/3. So therefore what my bending moment would be, and it is pushing you downward, clockwise anti-clockwise moment hai, so it will be negative minus kitna aega? Yes, minus 6 multiplied by 4/3. 4/3. Very good. Minus 6 multiplied by 4/3, and that is there is only one force. उसके बाद कोई एक force नहीं है, so we will only solve this as minus 8 kilonewton meter. Okay. And what about bending moment at second section? It will be minus 6 into 4/3 तो already रहेगा, plus ये वाला moment जो है वो add हो जाएगा. But it is anti-clockwise moment. बराबर है ना? तो मुझे minus m लिखना पड़ेगा. Because वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, आई एम वर्किंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, माइनस m लिखना पड़ेगा. और m का वैल्यू खुद ही नेगेटिव था, तो ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है. एज यू कैन सी इसका आंसर तो -8 आता है. माइनस ऑफ -8 इज गोइंग टू बी प्लस एंड द फाइनल आंसर विल बी 0. और एल्स वैसे भी हम लोग एंड पॉइंट पे 0 ही लिखते हैं, राइट? यू नो दैट कि एंड पॉइंट पे 0 आता है. सो व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन? दिस इज एट पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. पॉइंट ए पे 0, पॉइंट बी पे यू विल हैव फर्स्ट -8 वैल्यू एंड देन 0. एंड हाउ विल यू जॉइन दिस? Again the increasing curve, but this time this curve will not be parabolic, it will be a cubical curve. हम लोग draw तो वैसे random कर रहे हैं, but it has to be a cubical expression, because if you are integrating a parabolic curve, you will always get a cubical expression. तो कोई भी quadratic polynomial को you integrate it, you are going to get the 1 degree higher equation. That is why we are writing it as cubical. Getting it? And this is your bending moment diagram. Okay, understanding this point? Have you understood this? Yes? Yes, sir. Okay. Yeah. Okay. So let's go to the next question then. So as you can see, now this particular beam, what is the type of beam? Can you tell me? What is the type of beam now? Yes, anybody? As you can see, the beam is not simply supported. It has got two supports at the point A point and B point, but they are not the end points. Okay, so when the beam is supported only at the end points, we call it a simply supported beam.
but when it is having a section of the beam running over after the support, we call this particular section as overhang section, and it is overhanging on the both sides. As you can see, point A से बाद left side and point B के right side में we have a section of beam which is having certain kind of loads. So therefore, this type of beam we call a overhanging beam. Now for this overhanging beam, we need to find out some points where the bending moment is going to be maximum and what is the value. So let us now solve this particular thing. Can you give me the values of your support reactions? We have a couple given at point 3, let's say I'll name these points somewhere. A, B, so already we have. Let's say one endpoint is C and the other endpoint is C and the other endpoint is D. So we are naming it as, let's say this is my point C, and this is my point D. Okay, so how will you find out support reactions? Can you give me the values, or let's solve it together? Let's solve it together. Support reactions. Okay, so now for support reactions, here it is which you will take summation of moments about point A. So we'll take summation of moments about point A, that has to be equated with 0. So what we'll get, this is 3 kilonewton moment is already there. It is anti-clockwise, so we'll take it plus 3. Then of the moment इसका 0 आएगा. यहाँ पे equivalent load आने वाला है UDL का. What will be the equivalent of that UDL? The equivalent of UDL will be somewhere here at a distance of 2 meter from here and 2 meter from here. And how much will be the intensity is 10 and the span is 4, so it is 40 kilonewton. 40 na? Huh. Okay, so then how will you solve the moment about a moment of that 40 kilonewton about this will be minus, because it is clockwise, so minus 40 into distance is 2 meter from point A. Then RB, reaction at B, uska moment positive आएगा, so into 4. Then minus 12, uska moment into 5 क्या आएगा, because A point से उसका distance 5 meter है total, and that is equated with 0. Can you give me the value of RB? Yes, quickly. Anybody? The 34.25. Okay, 34.25. Okay, others kindly cross Yes, sir. check. 34.25. Okay, good. So we are having the value of 34.25 kilonewton, right? So this is the first answer. Now what next we are going to do is the summation of vertical forces is 0. Summation of vertical forces may you have only RA minus 40, that is downward UDL, equivalent of UDL, plus RB which is going upward, and minus 12, that has to be equated with 0, but you know the value of RB, so minus 40 plus 34.25 minus 12, it is equal to 0. So give me the value of RA as well. Yes. So it is 52 minus 34.25. 17.75. 17.75. Very good. So now let's go to the next one. अभी shear force calculation करेंगे. Okay. Now I would अच्छा, is there any volunteer who would like to give me the solution for this? मतलब equation बताओ, I will be writing for everyone. Okay, anyone like to come voluntarily, or otherwise I will have to call you. Try it at least. Wrong होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा. I'll try. अच्छा, Akshata is going to do. Very good. So I'll try, sir. अच्छा, very good. Okay. So tell me what to write, how you will be writing, as if you are solving it. I'm just dictating you. I'll start from D point at point D. Okay, you are starting from the right hand side. Yes, sir. But I'll go towards left, as in I'll take the left hand side, but I'll start from point D. Okay, anyway we can. So let me write down at point D. Okay. Yes. Sir, would RA and R be considered? Yes. As in point A and B will point A and B considered in this? Yes, of course. We have to consider A, B, C, D, all 4 points. So at point D, SF1.
Shear force Okay, 1. so I'll start from the right hand side. I have not calculated this side, so I'll start from C. Okay, as you wish. So at point C. At point C, Yes. so there is no support reaction, right? So there would be 0. So F there is will be equals to 0. one value 0. Very good. Then at point A, Okay, at point A, SF1 is 0 SF1 is 0. Very good. and SF2 is RA, that is 17.75 Positive or negative? positive. Okay, good. Next. Then at point B, Very good. At point B, SF1 is 17.75, SF1 is 17.75 okay. That's it. plus 40. Sorry, minus 40. Minus 40. Okay, very good. Very good. How much will be this answer? Acha, others can do calculation. 40 minus 17. 20.25. 20. 22.2. Minus 22.25, 22.5. right? Minus Minus में 22. minus sign लिखना भूल गए हम लोग. Minus 22.25. Very good. Next. Then SF2 would be minus 22.25 plus RB, that is 34.25. How much? Well, आएगा ना? 12. 12. 12. Good. Good. Next. And then at the point D, sir, actually point D is not visible because the zoom scripts. What? The point D is not visible because of the zoom strip, the mute and start Okay, okay, buttons. okay, okay, okay. Okay. Just a minute. Hello? Yes? Yes? No, sir, it is visible. अरे मैं लेक्चर में हूँ, थोड़ी देर बात करूँ. 12 साढ़े 12 के. Yes. Okay, let me write down over here. At point D. At point D, SF1 is 12 minus 12. Yes. SF1 is 12 minus 12. The 12 first minus? SF No, only 12, only 12. Only 12. There is no load added over here, na? So you cannot add anything. And what is SF2? Sir, 0. on the left hand side from the previous one, we have 12 value, right? SF2 is 12 from Yeah. the previous point B. And we also have a load on 12 on D, that is 12. But we are Yeah. calculating before that. Before Okay, that, na, right, we will be right. taking So now like it will two be sections 0, like right? this. As you can see here, Yes, two sir. sections. This is for one section. Iske left mein we will not consider this 12. But Right. when you're going for the right section, we will going to consider this 12. So it will be Now 12 it will be minus 0. 12 and it is will be 0. Yes, sir. Very good. That's a nice try. Very good. Acha. Is there anyone other than Akshata who would like to give me the BMD calculation? Yes, yes. Otherwise, I will call out. Yes. Tushar, can you start with? Tushar Gupta. Okay, just a minute. Yes, Tushar. Are you there? Okay. Sir, there are two Tushar Acha, Gupta and Tushar Gupta. Sharma. Acha, Tushar Janwa, you can start. It's a 2 CR, hai na? Yes, sir. Yes, yes, start. Yes, sir. Go ahead. For matlab, to start with BMD, Yes. first we can start with a point, any point C, that be it C. BN? आप मतलब हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं एंड स्टार्ट करने के लिए टेक पॉइंट सी एंड सी पे हम सी से मैं बेस मान के चल रहे हैं Okay. टू स्टार्ट विद एंड टू सी पे सर अगर हम लिखते हैं एट पॉइंट सी तो Okay. एट बीएमडी एट पॉइंट सी Yes. तो उसमें डिस्टेंसेस हम कैलकुलेट करेंगे तो एट एक सेकेंड मैं कंफ्यूज हो गया एक मिनट सर Will be considering 2 sections at C or not? we would be considering two sections, sir. Yes. Why?
So because एक उस point पे load करा है and उससे पहले कौन सा load हुआ है, तो BMD at C will be 0 simply, क्योंकि उसके left side में कोई load नहीं है. No, but as we are doing for BMD and we have a moment at C, na, Yes sir. we will be considered two sections like this. And for one section, for section 1 it is 0, but for Yes, another sir. section will be For left side it will be 0. For Yeah. first section it will be 0 and second Yes. for it will be 3. It would be 3 or minus 3. So How it is then how this particular anti-clockwise. so anti-clockwise is negative on the left hand side, right? Yes sir. It has to be minus 3 kilonewton meter. Okay, fine, good. Go ahead then for A At point A, for BM1, it would be Yes. minus 3 only. Minus 3 And into at 2. point A there will be only one moment Yes sir. because we don't have any moment at point A. So only one section on the left hand side will take on the left hand side पे दो चीजें हैं. एक तो ये minus 3 already है and there is no load as such acting. sir. So only minus 3 will be there Yes. as the bending moment. Okay, very good. Next, At point B, at point B, yeah. so we have minus 3 from the left side, Yes, plus it would be the RAY at a distance of 4 meters. okay. So RA की वैल्यू हमारे पास है 17.75, तो minus 3 plus Plus that would be 17.75 into 4. okay, into 4 right? Then Minus 40 into 2. minus 40 into 2. Very good. Very Yes, good. sir. Very good. How much will be the answer? So it would come around, just let me calculate. Yeah. Others can help out to do it quickly. Minus 12. Minus 12, okay. And what about bending moment at the last point D? Bending moment for the last point D we would directly consider कि B point पे इतना था, तो minus 12 into 1 and RB into plus RB into 1. That is plus 34.25. नहीं, D point पे तो 0 आएगा ना? End point है, वैसे भी less 0 रहता है. ऐसा हाँ ठीक है, दोनों साइड से कैलकुलेट करेंगे तो 0 हो जाएगा. We'll get a 0 only. Okay. So now other than Tushar, now who will help me out to draw these diagrams? अच्छा, Om is there? बहुत दिन से उसका आवाज नहीं सुना. Yes, Om, can you come up please? Are you there or not? है सर, ओम है. किधर है? म्यूट पे? लगता है अभी ऑडियो कनेक्टेड नहीं है इस वक्त. Okay. Fine. Yes, Rohit, you are there, na? So you can answer. Yes sir. Just tell me out how to draw now. We have calculated something. So let's try to draw it. How to draw for SFD and how to draw for BMD. I'm joining the points here. Point A, C, A, B, and D. Yes. So as you can see, start point कहाँ से हो रहा है? कैसे करेंगे? Try it out because this is your exercise only. ऐसे भी हम लोग घर पे बैठ के virtual mode में तो you are not solving anything. That is why I am giving you some practice over here. Yes. Otherwise, I would solve it in 5 minutes and end up वो session नहीं चाहिए वैसे. Okay, fine. ये पहला 0 है, very good. तो वो तो दिख ही रहा है हमें, C पे 0 है. हाँ, next. What about A point? We have two values there. 0 रहेगा पहले. 0 and the other is? Hello sir. अच्छा, वो आ गया. So you called? तो तू बहुत लेट आ रहा है भाई. अभी अगला क्वेश्चन तेरे. ठीक है, रोहित कंटिन्यू. उसके बाद minus 22.25. माइनस नहीं, 17 है ना? हाँ, पहले A पे 17.75. ओके, हाँ, तो ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 17.75. ओके, हाँ, and B पे minus minus 22 22.25. and then 12. So I will go for minus 22 here. 0.25 and then positive 12 ना? So positive 12 somewhere here lesser than 17. Just reference लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 17 तुमने छोटा लिया है और 12 ज़्यादा दिखा है. So proportionate diagram is required, no measurement. Okay, and point D पे पहले 12 फिर 0.
पॉइंट डी पे पहले 12 and then 0, so this is 12 and then this is 0. Okay, now how will you join this? So whether you are going to join this way or this way, how will you going to do it? So फर्स्ट एक और ज्वाइन करेगा ना ए 0. No, अच्छा, who is talking? रोहित ना? Okay, wait a minute. हाँ, yes. कोई एक ही बताओ. हाँ, रोहित. अच्छा, दो रोहित है अभी, अपने यहाँ पे सब कंफ्यूजन है. रोहित यादव आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके. पहले C से 0 0 जाएगा, फिर A से ऊपर जाएगा 17. हाँ. Okay, very good. Because we know that कि there will be a vertical line at point A because there is a load at point A. तो ये यहाँ से ऐसे join होने वाला है, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे continue रहेगा because there was no load. Okay, हाँ, good. Next. सर स्ट्रेट लाइन जाएगी शायद, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ना. हाँ, तो straight line for point 22.25 की 12. 22.25. Yeah, because this is on the left hand side, this is right hand side, so it has to be like this. Okay, assuming that this is 22.25. And next, it will be vertically upward. Very good. Next, फिर 12 horizontal for 12 and then vertically down. Yeah. Now, what is this point? Is it important for us? Yes sir. यस सर. Why? मैक्सिमम शेयर एसएफटी रहेगा. एसएफडी. SFD तो 0 है रे, दिख रहा है ना, ये 0 point है ना. नहीं सर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा सर. Maximum bending moment. Very good. Maximum अच्छा, bending now moment. can you tell me the अच्छा, अभी another दूसरा वाला रोहित पाल. Okay, give me the value how to calculate the location of point P. How will you write location of point P के लिए? सर दो ट्रायंगल है तो उसका I'll call this as x and this is 4 minus x. okay, then 10x सर 10 theta is लेंगे नहीं cos you tell me the equation. How will you calculate x? a minus x नहीं sorry sir, x upon X upon 17.75. I'll write down location of point P. Sorry, point A नहीं, point P. X upon 17.75 okay, 17.75. Yes, equal to 4 minus x okay upon 22.25. Tell me the value then. Yes sir. Yes, anyone else? Give me the just value of x. $17.75 से 22.75 कितना चाहते हैं? 2.25 और इसमें ना 2. अच्छा, ये x का value 2.25. Okay, 2.253. Okay, good. So we have written 2.253. Okay, now how will you calculate bending moment at that point? ये पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे? ये हमारा पॉइंट पी है ना, इधर पॉइंट पी इधर है, तो ये इसके लेफ्ट हैंड साइड पे काम करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें इतना ही यूडीएल देखना पड़ेगा, राइट? सो लेट मी ड्रॉ दैट थिंग ओवर हियर. थोड़ा वो मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ. या तो देखो, अगर मैं पॉइंट पी, ये मेरा पॉइंट पी है सेक्शन, इस पॉइंट पी ना, तो उसके लेफ्ट में देखेंगे तो मेरे पास एक ये तो है कपल है, ठीक है, कपल है 3 किलो न्यूटन मीटर का. देयर इज अ रिएक्शन एट पॉइंट ए, ये ऑलरेडी है मेरे पास आर ए. ओके, एंड देयर इज अ यूडीएल. अभी मैं इतना ही यूडीएल सॉल्व करूंगा ना. ये यूडीएल का ये कितना इंटेंसिटी है? 10, बराबर. तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? बिकॉज माय डिस्टेंस इज only 2.253 ना. Yes. तो 10 into 2.253 will be 22.53. Yes. And it will act at a distance of 2.25. Half ना रे. Yes sir. x का वैल्यू 1.775 आएगा. हाँ सर, वो रॉन्ग है. हाँ सर, वो -22.5 है ना. Okay. नहीं, माइनस साइन नहीं लेना है. You don't have to consider minus sign.
Do not consider minus over here because minus is just the magnitude, just the showing that it is in the downward direction. हम लोग triangle, similar triangle में उसका height ही balance करेंगे. Height value matters. सर तब भी 1.775 सर ही नेगेटिव आएगा. नहीं आ रहा है, हाँ, sir. 1.775 आ रहा है. 1.775. पॉजिटिव 1.75. I'm just clarifying it कि do not take negative values there. Okay. हाँ तो बताओ अभी 75. 1.775. Okay, ठीक है. तो ये 1.775 है तो it will be also 1.775 and यहाँ पे हो जाएगा 17.75, राइट ना? बराबर. हाँ तो give me the value. Now ये कितना कहाँ पे एक्ट करेगा? It will act at 1.775 by 2. Yes, sir. Okay, 1.7, sorry. 0.8. Yeah. So नहीं वो जाने दो 0.8, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे ना बेंडिंग मोमेंट P का. Yes, तो sir. बेंडिंग मोमेंट एट P. हाँ अभी मैं जब इसके लेफ्ट हैंड साइड पे बात करूंगा, ये सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या क्या है? तो एक तो मेरा ये मोमेंट है जो एंटी क्लॉकवाइज है, तो आई विल राइट -3. देन एक RA आता है, RA कितना वैल्यू है उसका? प्लस 17.75 एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच? 1.775 माइनस ये वाला जो लोड है 17.75 into distance कितना उसका? 1.775 divided by 2. by 2. Now give me the value for your bending moment. Give me the value for bending moment. कितना आया? -15.75. -15.75 माइनस लिखता हूँ, -15.75 किलो न्यूटन मीटर. Okay. Now see here. Now I will be drawing the bending moment diagram. तो ये मैं पॉइंट P के लिए मैं थोड़ा एक्सटेंड करके लेता हूँ. हाँ तो बेंडिंग मोमेंट के लिए C पॉइंट था, A पॉइंट है, B पॉइंट है. This is P, this is B and this is D. पॉइंट C पे तो वो 0 था, तो we can directly consider this as 0. Then पॉइंट C पे दो वैल्यूज था, एक 0 एक -3, राइट ना? एक 0 एक -3. पॉइंट A पे -3 कंटिन्यू हो रहा था, दिस वाज -3. पॉइंट P पे इट इज माइनस हाउ मच? -15.75. या एंड देन पॉइंट B पे एक था -12, राइट? और एक 12 and -22. हाँ वही ना, वही लिख रहा हूँ. हाँ. पॉइंट B पे एक ही वैल्यू है ना, -12. हाँ -12, सॉरी. हाँ एंड देन D पे 2 है ना? नहीं BMD देखना है ना अभी. BMD नहीं. ओके. नाउ सी हियर. Yes, sir. यहाँ पे वर्टिकल डाउनवर्ड वर्टिकल लाइन आएगा बिकॉज देयर इज अ कपल, सो देयर विल बी वर्टिकल लाइन. देन -3 कंटिन्यू रहेगा, तो दिस इज वी हैव कंटिन्यूड. Straight line. देन यहाँ पे देखो इंक्लाइंड है तो यहाँ पे कर्व आएगा, और कर्व के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स ऑलरेडी है, तो इट विल बी तो इट विल बी लाइक दिस. Okay, so this is a curve. Which type of curve is this? It's a parabolic curve now. Parabolic. Because ये straight line था, this is a straight line, so I will call it as straight line. So therefore this is a parabolic curve. And उसके बाद यहाँ पे inclined line एक join करेंगे. So this is how we get the bending moment. Okay, understanding it. This is just a revision part, and it is very good that you guys are remembering it. Yeah. You guys are remembering it and able to answer. Very good. So now let's go to the next question. Okay, now the chance is given to Om. Yes, Om, come in and give me the answers. What to go about is. कैसे करेंगे अभी इसको? Yes, sir. Yeah. So first we will UVL निकालेंगे. UVL है ही नहीं. UDL. ये हाँ sorry. UDL. Okay. So let us go for support reactions. Okay, all of you calculate the support reactions and tell me. Also you will try to. Yes, I am calculating.
Good. So this is, there will be some reaction. I'm just identifying it, VA, and we will assume a couple. A couple or a moment, which is M. And how much will be equivalent of this UDL? It will act at 1.5 meter from here. 1.5 meter. 12, sir. 4 into 3 will be 12 kilonewton. Very good. 12, sir. Fine. तो क्या करेंगे सबसे पहले? Yes. Sir, VA equal to 17 kilonewton. VA is equal to 17. Okay, you got this directly. Should I write? Okay, I'm writing directly. VA equal to 17. What about moment? But out. Moment आएगा. VA to 17 by looking at the picture. Okay, you can see downward 15 plus 12 plus 5 17. So upward भी 17 होना चाहिए. That is correct. What will be the moment? Moment के लिए हमें equation लिखना पड़ेगा. Summation of moment about you will take it, let's say A. इसमें एक moment हमारा M है, दूसरा moment है -12 into 1.5 और तीसरा moment है -5 into 5 ना, and that has to be equated with 0. So when you solve this, you will get the M value as 25 plus 18. Yes, sir. Yes. 43. I may be wrong, morally calculated. बराबर है? 3 yes sir. हाँ. Very good. Yes, sir. Good. So I got this. Some are active on chats as well. What is this? Ronak. Ronak, you can unmute yourself. You have enough. I have given full liberty to talk. Okay. Yeah, fine. So we have summation of MA and we have calculated this. Okay. Yes, go ahead. How to do with this shear force calculation? So we'll calculate shear force at point A. Okay. So we'll calculate for two parts, SF1 and SF2. SF1 will be 0. Yes, SF1 is 0. And SF2 will be the VA, which is. So upward है तो positive or negative? So on left hand side it is positive. Okay, 17. Next. Then at point B. Yeah, B. SF1 will be. Is this particular point we need to consider? Yes or no? Okay, others also can answer. Should I consider this point or not? No, sir. 0. No, sir. So the thing is, I should consider that point. Why? Because at that point the loading changes. My UDL ends there. Right now, उसके बाद तो UDL नहीं आएगा. तो जो मैं UDL का incline line बनाऊंगा, वो वहाँ पे end होना चाहिए ना? बराबर कि नहीं? So this is a point of interest. So sometimes they might not be giving you the point, but you have to be very careful कि कहाँ पे loading pattern change हो रहा है. As you can see, there is a loading pattern changes, and I'll have to have a monitoring this particular point because my SFD is going to change in shape at this point. Because between A and let's say if I call this point as C, between A and C it will be SFD will be inclined line, but after B to C it will be a straight line because there is no load here. There is no load here, right now. So this is sometimes ऐसे type of question तुम्हें exams में आ सकता है where point is not given, so you cannot claim that it was not given, so that's why I didn't consider. You are the whole analyzer of this particular problem, so you have to identify whether I should consider that point or whether I should not. Okay, so I'll have to consider this point. That is why I'm finding that point C. So instead of going for point B directly, now tell me what about point C? Yes, there will be only one value, that is correct. But उसके left में क्या होगा? 17 minus 12, 5. So 17 is VA minus that 12. 12 ना? ये वाला load. If I talk about this section at this point. Equal to 5. So it will be 5 kilonewton. Right. Yeah. And then the last point at point B. At point B we'll have two values. -5 and 0. Yeah. Point. दिखता नहीं है, मालूम है. नहीं तो C पे एक ही क्यों लिया हम लोग ने? सर SF1 भी ले सकते हैं, 1 और 2 दोनों ले Frequency सेम ही आएगा ना? सीधे लोड नहीं है ना. Okay. At point B, shear force 1 is that same value 5. -5. -5 Sir, na? -5. -5 na?
में 5 ही रहेगा क्योंकि वो इधर सेक्शन upward है लेंगे ना, तो उसके लेफ्ट में इधर कितना है 8 अच्छा हाँ हाँ ओके ओके सॉरी सॉरी बाद में 5 - 5 हो जाएगा और वो 0 होगा। 0 ओके हाँ गुड नेक्स्ट। अच्छा लेट मी ड्रॉ दिस इमीडिएटली सो दैट आगे का पार्ट इजी हो जाएगा। सॉरी लाइन ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट है। या सो बेंडिंग मोमेंट but before bending moment let us draw the SFD. So point A, 0 point C and point B. अच्छा I didn't ये कंसीडर करने की जरूरत नहीं थी ये लाइन। ओके फाइन। सो पॉइंट A पे कितना 0, देन पॉइंट 0 then 17 17 ओके। सो 0 and 17। नेक्स्ट C पे there is 5 only one value 5 5 5 5 and B पे 5 and 0 5 and 0 yeah. So we have this is then we have a inclined line till C yeah then straight line this is a straight line. Very good. And join. So SFD was so simple here. Now let's Yes, go for BMD. Yes. Hello, so sir. BM bending moment at point A. Sir, in this way, how we found that at which point the bending moment is maximum? Bending moment is Maximum. सर किस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा इसमें? इसमें वो तो पता ही नहीं है, अभी तो कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा। जब शियर फोर्स 0 होता है ना तो वी आर वेरी श्योर कि वो उधर मैक्सिमम होने वाला है, अदरवाइज हमको पता नहीं होता। देन आई हैव टू कैलकुलेट। ओके, व्हेन शियर फोर्स इज 0 द बेंडिंग मोमेंट इज गोइंग टू मैक्सिमम। एंड यहाँ पे भी शियर फोर्स 0 है 2 पॉइंट्स पे। कौन से 2 पॉइंट्स पे? ए एंड बी। ए एंड बी। तो उसमें से एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा बेंडिंग मोमेंट। लेट्स सी किधर आता है। सो अभी ए पॉइंट पे देखो मोमेंट है, तो आई हैव टू गो फॉर बेंडिंग मोमेंट 2 सेकंड, राइट ना? हाँ, so let's say I'm writing at point A, bending moment at section 1 is 0 and at section 2 I'll have to consider that moment. कितना है वो moment? m है, like anti clockwise है तो minus m, so minus 43 किलो न्यूटन मीटर। हाँ, what about point C? So point C. हाँ, point C Yes sir. कितना? पॉइंट सी अभी डायरेक्टली ये पॉइंट सी पे है ना, उसके लेफ्ट में क्या क्या है? तो एक ये मोमेंट है, एक है वर्टिकल फोर्स है और ये वाला वर्टिकल फोर्स। तो यू कैन राइट डाउन टू वे इक्वेशन ऐसा लिख सकते हो। एक तो -43 एज इट इज, सॉरी प्लस VA का वैल्यू कितना था 17 मल्टीप्लाई बाय उसका डिस्टेंस हो जाएगा 3 माइनस 12 इंटू 1.5। और यू कैन राइट डाउन ऑन द राइट साइड। यू कैन सी राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे एक ही लोड है, So only 5 into 2.2. हाँ, बट वो डाउनवर्ड पुल कर रहा है तो -5 इंटू -5 into 2. तो आंसर इज -10 और ऊपर का भी वैल्यू -10 ही आएगा। देखो Yes sir, -10. ओके, तो एट पॉइंट सी हो गया एंड देन लास्ट पॉइंट इज ऑलवेज 0 0. या। सो हाउ विल यू सॉल्व? So first 0, then -43. हाँ, बस 0 देन Hello. -43 ओके, Minus What 40. face करेगा? पैराबोला। देन Then sir, -10 -10 sir. हाँ -10 देन नेक्स्ट 0. हाउ विल यू जॉइन दिस? दिस विल बी वर्टिकल लाइन। अभी ये -10 है ना? हाँ, तो अभी कैसे करेंगे? इंक्लाइंड लाइन। अभी ये शेयर फोर्स का वैल्यू देखो, ये क्या हो रहा है? ये शेयर फोर्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है ना? तो मुझे अभी कब मुझे बताओ कि ये वाला करेक्ट कब है कि ये वाला करेक्ट है? तीसरा पॉइंट है ही नहीं ना हमारे पास, बराबर ना? ये तो पता है कि इधर ऐसा ज्वाइन करेंगे, वो ऊपर वाला सर। सर ऊपर वाला। दिस इज करेक्ट। व्हाई? सर वो स्लोप डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो स्लोप क्या हो रहा है, ये टेंजेंट का स्लोप ज्यादा था, इंक्लिनेशन जैसे जैसे टेंजेंट बनाऊंगा इंक्लिनेशन कम कम होते जा रहा है, राइट ना? यस सर। Therefore this is going to be my correct वाला, this is wrong. Okay, sorry ये straight line ही दिख रहा है पूरा। Yes sir. And this I will calling it as parabolic curve. Understood now?
So I hope now people are you people are Yes, very sir. much understanding SFD BMD. Now let us go for the reverse action. Means what? I'll be giving you the BMD diagram, okay, and you'll have to draw the, so, or else I'll be giving you the SFD diagram, and you'll have to figure out, okay, what are the values of what will be the loading diagram and what will be the BMD of this. Okay, so that kind of question will give. Okay, let me draw the question. For that I'll screen share off kar dunga. Okay, let's. Okay, so now we'll go for the reverse order. So we have a question, next question listed here. Draw the loading diagram and the BMD for the SFD shown. So here see, the SFD drawing is already given to you. You have to identify what kind of loading diagram it will have and what is the BMD. So can anybody tell me how? Can you look at the diagram and tell me what is going to be there in the loading diagrams? Which kind of beam it is? Sir, first will be uniformly distributed. Yes. A So to B. always from SFD we can identify whether how the load end conditions of the beam are. As you can see, the beam दोनों end points पे SFD 0 है. SFD दोनों end point पे 0. वैसे भी होता ही है सब type के beams के लिए. But वहाँ पे दोनों पे देखो A point पे भी vertical upward 25 value है और D point पे भी 20 value है. मतलब दोनों beam के end पे क्या है? Vertically upward reactions है. Therefore it is a simply supported beam. Okay. तो मतलब मुझे अभी कुछ अगर मैं इसको solve करूँगा. So मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं रेफरेंसेस बना के रखूंगा. ओके, सो रेफरेंसेस के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज, लेट्स से इसको वर्टिकल अपवर्ड लेता हूँ, इसको भी वर्टिकल अपवर्ड लेता हूँ, पॉइंट बी को भी लेता हूँ और पॉइंट डी को भी लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक लाइन बनाना चालू करता हूँ. तो मुझे एक पता चला कि यहाँ पे कोई तो रिएक्शन आने वाला है, वर्टिकल रिएक्शन एट ए. वैसे यहाँ पे भी कोई एक रिएक्शन रहेगा, वर्टिकल रिएक्शन एट बी. कैन यू गेस द वैल्यू ऑफ ए एंड बी? Yes. Can you try? What will be the value of A? So now you have to. 25 आएगा. Yeah, very good. You have to recall that कि मैंने बोला था कि whenever there is a point load, तो वो क्या रिफ्लेक्ट होता है SFD में वर्टिकल लाइन से. तो you can see here SFD at point A वर्टिकल लाइन है और वैल्यू कितना है वर्टिकल लाइन का 25. मतलब और ये 0 से 25 जा रहा है ना, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. So therefore अपवर्ड डायरेक्शन में V एक्ट कर रहा है which is of 25 किलोन्यूटन. And similarly VB अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है 20 किलोन्यूटन. ओके, डन. अभी मुझे बताओ A और B के बीच में क्या है? Sorry, uniformly distributed. हाँ, it is uniformly distributed load UDL. Now can you tell me the value of UDL? Yes, can you tell me the value of UDL by looking at this particular SFD? N, sir. N. Value of UDL. हाँ, how will you calculate it? कैसे calculate किया? Sir, वो 25 minus 15. minus 15. हाँ, तो देखो ये 25 से कितना गया? -15 तक. मतलब इक्विवेलेंट यूडीएल का वैल्यू कितना रहेगा? 25 माइनस 15 है ना, नीचे है ना वो, ये वैल्यू से वो माइनस कितना हो जाएगा? 25 माइनस 15 40 किलो न्यूटन, राइट? हाँ, तो अगर मुझे यूडीएल का इंटेंसिटी फाइंड करना है तो W मल्टीप्लाई बाय स्पैन, राइट ना, इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय स्पैन मस्ट बी इक्वल टू 40, बट आई नो द स्पैन इज अ 4 मीटर, बराबर ना? तो व्हाट इज द इंटेंसिटी? The intensity of loading is 10 per meter. मैं यहाँ पे लोडिंग डायग्राम में क्या बनाऊंगा? Intensity which is of 10 kilonewton per meter. Understood? Yes, sir. Yeah. हाँ, next. अभी ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब कुछ भी नहीं है. No load. हाँ, बट अभी C पे क्या हुआ? ये पॉइंट C पे क्या हुआ? तो C पे पॉइंट लोड आएगा. कौन से डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन की नीचे की डायरेक्शन में? अपवर्ड. हाँ, डाउनवर्ड. अपवर्ड सर, इंक्रीज हो रहा है ना. हाँ, तो देखो अभी इसमें पता चलेगा कि क्या मिस्टेक हम करते हैं. ऐसे ठीक है, तो ऑलवेज स्टार्ट विथ ओनली एंड पॉइंट. कोई एक पॉइंट एंड पॉइंट से स्टार्ट करो. जैसे कि मैंने A से स्टार्ट किया तो आई शुड नॉट जंप टू B. अभी तुम्हें पता चलेगा कि B में जो लिखा है मैंने वो रॉन्ग लिखा है. इट हैज नॉट, वो ऐसा राइट नहीं आएगा. क्यों? देखो मैच नहीं होगा. तो देखो अभी मैं A से अगर लिखता हूँ तो देखो अभी VB का अगर मैं इरेज कर देता हूँ उससे VB को, फॉरगेट VB नाउ. नाउ सी
मैं ए से स्टार्ट किया, पहले 0 था, 0 से 25 ऊपर, इसलिए मैंने एक लोड बनाया. देन 25 से -15 तक गया, देन आई कैलकुलेटेड दैट यूडीएल, वो 10 किलो न्यूटन का यूडीएल है, सो आई ड्रॉट यूडीएल. तो अभी यूडीएल के बाद देखो ये कांस्टेंट जा रहा है अप टू सी, मतलब अप टू सी देयर इज नो लोड, बट सी पे देयर इज अ वर्टिकल जंप फ्रॉम 40 टू 20, फ्रॉम -40 टू 20. सो व्हाट इज द पॉइंट लोड एट सी? Point load at point C. Point load at point C will be equal to, क्या वैल्यू रहेगा उसका? वो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है. पहले वो -40 था, ऊपर 20, तो फाइनल वैल्यू 20 था, माइनस ऑफ -40 कितना? 60 किलो न्यूटन. सो देयर इज अ वर्टिकली अपवर्ड लोड. सो यू ड्रॉ दिस वे और दिस वे, नीचे ड्रॉ करो या ऊपर ड्रॉ करो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसका मीनिंग एक ही होता है. सो आई विल बी ड्रॉइंग इट एज अ सपोर्ट, मतलब यहाँ से मुझे पता चलेगा कि ये सिंपली सपोर्टेड तो है, बट सपोर्ट बी पे नहीं है, सी पे. ओके, तो सी पे ये लोड कितना आएगा? 60 किलो न्यूटन, एंड दिस इज वर्टिकल रिएक्शन, आई कैन कॉल इट एज एट सी. देन उसके बाद क्या गया मैं 20 से वो कंटिन्यू जा रहा है 20 पर, और लेकिन 20 से अभी नीचे आ रहा है, 0 पे ड्रॉप हो रहा है, तो इट हैज टू बी 20 दिस वे, राइट? मतलब जो मैंने रिएक्शन सी पे लिया था वो ऐसा है, डाउनवर्ड है. गेटिंग इट? Now it satisfies all my conditions and I could draw the loading diagram. So this is called as loading diagram. Okay. इसमें ज़्यादा calculation नहीं, it is only about how you understand the SFD. Now can you draw the BMD part? That is a repetition now. You know the loading diagram, you know the SFD. So repetition of drawing BMD. So how will you draw the BMD diagram? उसके लिए मुझे पॉइंट P की जरूरत पड़ेगी, राइट? बिकॉज देयर shear force is 0 here. तो उसके लिए मुझे x का वैल्यू भी अज्यूम करना पड़ेगा. दिस इज x, देन दिस इज 4 minus x, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, सो लेट मी ड्रॉ द लाइंस फॉर रेफरेंस. या सो सबसे पहले लोकेशन x is 2.5. ओके, वेरी गुड. पॉइंट P, तो मैं कैसे लिखता हूँ उसको? x अपॉन 25 डिवाइडेड बाय सॉरी इक्वल टू 4 माइनस x अपॉन 15. हाँ, तुम्हारा x कितना आया? 2.5. ओके, सो नाउ हाउ टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैं वापस मैं बना देता हूँ बिकॉज आई हैव सम स्पेस. सो ये पॉइंट P, ये VA रिएक्शन मेरा जो 25 का था, ओके, और मेरा UDL स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ तक ही जा रहा है, आगे का UDL डॉटेड है जो मैं नहीं ले रहा हूँ. ये कितना डिस्टेंस है? 2.5 मीटर. तो मेरा इक्विवेलेंट लोड कितना आएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इज 25 किलो न्यूटन, एंड इट विल एक्ट एट 1.25, राइट? है ना? हाँ, तो मेरा बेंडिंग मोमेंट अभी कैसे लिखूंगा मैं? बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट P वो आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 2.5 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 1.2. तो आंसर कितना आएगा? 31.25. 31.25 किलो न्यूटन मीटर. ओके, डन हो गया. अभी ड्रॉ करते हैं. सर आई हैव अ डाउट. बोल. सर एट पॉइंट C 15 के बाद -40 लिखा है, तो -40 तो नीचे आएगा ना, वो पॉइंट तो -15 हो गया. एक मिनट, मैं क्वेश्चन लिखते वक्त कुछ गलत किया क्या? देखो. हाँ सर, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. फिर अगर हम कोई सी के वो साइड वगैरह लोड लेना. लेट मी चेक द क्वेश्चन व्हाट आई हैव, मतलब वो पीडीएफ में से कॉपी करते हुए डिड आई हैव एनी मिस्टेक? ओके, मिस्टेक है, मिस्टेक है, आई विल करेक्ट. ये 40 है ही नहीं उधर, वो गलती से लिखा मैंने, दूसरे क्वेश्चन का लिखा. ओके ओके ओके, सो लेट्स करेक्ट इट. वेरी गुड. हु इज दिस? सर आयुष. वेरी गुड आयुष. आई एम हैप्पी दैट यू गाइस आर. तो ये है ही नहीं, मतलब क्या है फिर यहाँ पे? दिस इज 15 ओनली. तो मेरा ये जो वैल्यू है ना, ये चेंज हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा अभी? दिस विल बी -15. तो ये कितना हो जाएगा? -35 ना? तो स्क्रीन शेयर नहीं हुआ. अच्छा, स्क्रीन शेयर हुआ ही नहीं. सॉरी.
Okay, wait a minute. हाँ, now see, तो मैं क्या बोल रहा Yes, था sir. कि यहाँ पे ये 40 नहीं है, वो मैंने दूसरे क्वेश्चन का लिखा, ठीक है। तो अगर वो वहाँ पे नहीं है तो क्या होगा? So this is not there, so this is 15 only. So here it will be minus 15 and here it will be 35 and यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो क्या होगा? 35, right? बाकी कुछ तो चेंज नहीं होने वाला, so it has to be same way. Now you draw the BMD. कैसे होगा BMD? बेंडिंग मोमेंट मैंने P पॉइंट पे तो फाइंड कर लिया, बाकी सब पॉइंट्स पे फाइंड करते हैं। देखो बेंडिंग मोमेंट P पे हो गया। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A और B तो मैं लिखूंगा नहीं, A और D 0 होता है। डायरेक्टली विल राइट फॉर B एंड C। लेट्स से फॉर B, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट एट B? उसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखते हो तो ये है तुम्हारा 25 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 4 एंड इसका इक्विवेलेंट कितना था? इसका इक्विवेलेंट कितना था? 40 ना? 40 एंड इट वाज एक्टिंग एट 2 मीटर, सो माइनस 40 इंटू 2, तो अंडर ये हो जाएगा 20 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया बेंडिंग मोमेंट एट बी। देन बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट। सी पे कितना आएगा? देखो सी पे राइट हैंड साइड का देखते हैं, राइट हैंड साइड में एक ही है, 20 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव आएगा, इनटू हाउ मच इज द डिस्टेंस? 2 मीटर, दैट इज 40 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो डायरेक्टली आ गया हमारा। तो अभी मैं ये 0, ये एंड पॉइंट 0, पी पे कितना वैल्यू था? 31.25। 31.25। बी पे कितना वैल्यू है? 20। अच्छा, पी पे वैल्यू, हाँ बराबर, ठीक है। आगे यस, डी पे 40 सर। डी पे मैं पहले वैल्यूज लिखता हूँ, ए, पी, बी, सी एंड डी। Okay, this is D. Yeah. So one is 0. Point P we calculated, it is 31.25. Okay. Then point B is 20. Point C is again 40. Right ना? Yes sir. Correct है क्या? देखो एक बार। हाँ 40, ठीक है। How will you join this? Now it will be a curve like this. उसके बाद ऊपर नीचे। ना यहाँ पे देखो मेरा SFD में 3 ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे मेरा शेयर फोर्स 0 था। एक तो पॉइंट A पे शेयर फोर्स 0 है, एक तो पॉइंट P पे शेयर फोर्स 0 है, और एक पॉइंट C पे भी शेयर फोर्स 0 है। तो ये तीनों में से कोई भी एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो सकता है। अभी ये तो एंड पॉइंट था इसलिए बेंडिंग मोमेंट इधर 0 है, बट यहाँ पे देखो बेंडिंग मोमेंट 31.25 है और इधर कितना है? 40। सो ये दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट मैक्सिमम होगा। ओके, अंडरस्टूड? सर 40 मैक्सिमम होगा ना, 40 मैक्सिमम है ना? हाँ वही, कोई एक मतलब जब पता नहीं रहता वैल्यू, अभी वैल्यू पता है तो आई कैन से 40 मैक्सिमम है। ये पॉइंट व्हेनेवर आई हैव मल्टीपल पॉइंट्स पे शेयर फोर्स 0, तो उनमें से कोई एक पॉइंट हमें बाइंडिंग मोमेंट मैक्सिमम देगा। ओके, अंडरस्टूड दिस? नाउ लेट अस ट्राई टू फिगर आउट द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिस वन। नाउ कैन यू टेल यस हाउ टू स्टार्ट विथ? कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग? लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। यस, टेल मी फॉर पॉइंट ए क्या आएगा? पॉइंट लोड सर। हाँ, सो देयर इज अ वर्टिकल रिएक्शन एट ए, 16.36 उसका वैल्यू रहेगा। ओके, देन बी तक कंटिन्यू ना, कुछ भी नहीं? नो लोड। इसे डी सी, यू कैन सी देयर इज अ यूडीएल। अभी यूडीएल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? 16.36 The value of UDL is 16.36 minus of minus 13.64. कितना? 40 ना? यस सर। 40 किलो न्यूटन। ये हाँ एक हो जाएगा और वो 39 होता है ना? सॉरी 39 नहीं, 30 होता है। 30 होता है। 30 होता है। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो हमारा ये 30 रहेगा। हाँ ठीक है। तो अभी मेरा W इंटू स्पैन, स्पैन कितना है मेरा यूडीएल का? 3 मीटर। इस 30, so therefore my W will be 10 किलो न्यूटन per meter. So I will draw
UDL of 10 kilonewton per meter. Okay, then next कुछ भी नहीं है, खाली यहाँ पे देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये अपवर्ड लोड होगा VD which is of 13.64. Then similar lines पे X and 3 minus X. First of all, find out the location of point X, sorry point P का लोकेशन फाइंड करो. उसके लिए इक्वेशन लिखोगे x अपॉन 13.36 इक्वल टू 3 माइनस x अपॉन 13. गलत उल्टा हो गया. बराबर है ना रे? ना सॉरी सर, हाँ आप बोले कर दो. मैं बोला गलत था, सही है, ठीक है. So tell me the value of x and then we can calculate the bending moments. बेंडिंग मोमेंट हम लोग डायरेक्टली ए पॉइंट पे 0 होगा, बेंडिंग मोमेंट डी पॉइंट पे भी 0 होगा, खाली हमें बी पी एंड सी पे फाइंड करना पड़ेगा. एक तो बी पे, एक तो पी पे और एक तो सी पे. यस, हाउ मच द वैल्यू ऑफ एक्स? $1.636. Okay, so we got this as 1.636. इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं तो ऐसा होगा. ये पॉइंट हमारा P है. तो देखो पॉइंट पहले बेंडिंग मोमेंट B पे देखते हैं. P पे अगर मोमेंट देखेंगे तो उसके लेफ्ट में एक ही फोर्स है which is 16.36 multiply by distance is 1, so answer is 16.36 kilonewton meter. बट P पे अगर देखते हैं तो दो आएंगे, तो वो आएगा 16.36 multiply by how much is the distance 2.636, राइट. ये 1 उसमें ऐड हो जाएगा ना, अभी ये 1 मीटर इसमें, ये इसमें ऐड हो जाएगा. सो 2 पॉइंट माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय दिस वुड बी अगेन 16.36 into the distance will be 1.636 divided by 2. I hope I am directly writing so you guys are understanding this. समझा ना? इसका इक्विवेलेंट इसके आधे पे एक्ट करेगा, तो यहाँ से मैंने उसका डिस्टेंस हाफ लिया है. ओके, and if you solve this you will get some maximum value. कितना आता है? 29.74. and bending moment at C के लिए राइट हैंड साइड से लिखना इजी रहेगा, बट वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है तो माइनस आने वाला है. कितना आएगा? minus 13.64 multiplied by 1.5. just take the value from left hand side also. लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे तो आएगा 13.36 मल्टीप्लाई बाय C तक जाएंगे तो 3 और ये 4 हो गया, माइनस 30 इंटू 1.5, तो कितना हो जाएगा ये? 20.46 माइनस में ना? सर माइनस 20.46 minus 20.46 kilo Newton meter. So now we can draw the BMD immediately. एक बार प्रैक्टिस हो गया तो these all things are very simple. कोई भी complex problem you can solve. There's no much of the difficulty you will find. Okay, so let's start. 0 for point A, B, C and D. 0 for point A, 0 for point D. Then B पे है 16 something, positive 16.36. C पे है 29. Okay, sorry, तो थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था. Let me take this point downward. इसको लिखता हूँ 16.36. ये हो जाएगा 29 point something. 29 point कितना है वो? 74. And point D पे कितना है? Oh sorry, मैं कुछ गलत कर. Point P हमारा इधर है ना? पॉइंट P इधर है. पॉइंट P का वैल्यू है माइनस पॉजिटिव 29.74 और पॉइंट C का वैल्यू है कितना है? पॉइंट C का वैल्यू माइनस 20.46 एंड D का वैल्यू कितना है? 0. So see here, how will I join? This is inclined line, then this will be a curve like this, and then this will be this. Now
are coming to a important point over here. Can you see this point? What this point shows? ये point C नहीं है, मैं इसको अलग से नाम देता हूँ रुको. मिनिमम होगा सर वो. Maximum. Point C हमारा इधर है. This is my point. Another point other than this, I will call this as, let's say, point Q. So here, the point Q, at point Q, what is your finding? You are finding the bending moment is how much? 0. And this particular point is called as point of contraflexure. Called as point of contraflexure. Now, what is this point of contraflexure? The point of contraflexure is the point where the bending curve changes its sign. Now, you will say that, yes, sir, क्या बोल रहे हैं? Bending curve क्या होता है? So, basically, whenever a beam bends, it is a curve. It is a parabolic curve. But वो curve अगर change करता है sign में, मतलब उसका slope change होता है, positive से negative हो जाता है, then it is a point of contraflexure. You are having maximum stresses at that point. मतलब maximum stresses आएंगे and वो बहुत point important होता है because we need to support it. Otherwise design fail हो सकता है वो point पे. तो contraflexure point क्या होता है? तो basically अभी अगर let's say कोई beam नहीं है यहाँ पे, scale अगर होता है तो लेकिन कुछ है नहीं यहाँ पे available. So we have a, let's say this is a pen. So ये मेरा beam है. इसके ऊपर मैं अगर vertical load दूंगा तो ये beam ऐसा curvature में आएगा. Can you see this? अगर ऐसा beam है, load दिया मैंने, तो ये beam ऐसा bend होता है. This is a curvature, right? And ये point पे देखो, ये point पे tangent maximum, तो इधर हमारा bending moment maximum आएगा. But suppose if I have a beam like this and load is given like this, तो अभी तुम्हारा ये beam है ना ऐसा bend होगा, right ना? So here क्या होता है? At somewhere here, ये जो beam था वो ऐसे downward beam हो रहा था, अभी upward. Sagging and sagging happens simultaneously. So at that point, the point where this sagging and sagging changes, the point is BMD 0, and that point is called as point of contraflexure. Okay, understood this? Have you understood the point of contraflexure? Yes, sir. Yes, sir. And the point of maximum bending moment is what? The point of maximum bending moment means shear force is 0, and the point of contraflexure means bending moment is 0. Getting my point? Yes, sir. Are you understanding or not? Yes, All of sir. you have understood this part? Any doubts? Yes, sir. No, sir. Okay, so shall we stop here? Yes.